Assalamu alaikum everyone and welcome to Future Serve Overseas Education Services. I am Varda Mazhar and this is Mr. Amar Awais, currently serving as ESL and IELTS instructor at Future Serves. Welcome, sir. Thank you. Thanks, madam. And we warmly welcome you all, our beautiful audience. So guys, before getting started with the topic of our discussion today, let me give you a little bit about Future Serves, and this is especially for our newcomers, all right? So guys, Future Serves is basically serving as an educational advisor, and we are serving in three broad categories. The number one is the career counseling, number two is the international exposure, and number three is the skills development. In the career counseling, we help you find your path, your way. Keeping your academic record in consideration, what we do is we help you find the most suitable, the most possible disciplines in which you would love to pursue your higher education from abroad. We also help you find the best suitable universities for you. We also guide you through your application processes, through your documentations, your visa processes, and other relevant procedures. In the international exposure, this is something that is very important, because when you are traveling to abroad, you must have to have some little bit information about the place you're going to live a little longer. So what we do is we provide you with some of the traditional and the cultural tips. We also give you the pre and the post departure guidelines, that is that from your departure to your arrival, from your arrival to your departure, everything that is necessary. In this skills development, we help you, polish you to enhance your employability skills so that you can mingle with the job market, excuse me, for in the place you're going to live a little longer again. So we also give you some tips. We also provide you with some ideas through which you can enhance your abilities to nourish in the job market of the place you're going to live. So this is it. Thank you for your patience, and let's get back to the point. So today, the topic of our discussion is essay writing. This is one of the most important topics, again, after statement of purpose. And I would request Mr. Amar, let's get started with essay writing. Thank you once again. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent, the King of the kings and the King of the day of resurrection. Thank you so much once again for giving me this precious chance to have a discussion on this very important topic, which is all about the creative writing skills and the essay writing. To be very honest, I would say that this essay writing is counted as one of the most important and mandatory tasks for these students who apply for IELTS, or they apply for competitive examinations, or they really want to go for the content writing, they really want to go for the, the letter writing, the application writing, and all of things, right? Basically, if I talk about the academic writing in IELTS, right? So I would certainly come across a lot of rules and regulations, and I would say, all right, if I've got the appropriate rules which I have to apply in the academic forum to compile my thoughts, my brainstorming, and all that, and I'm just putting the words on the piece of paper, so it would definitely cost me around a very difficult task if I do not have any knowledge about it. So for that particular thing, I by myself want to explain this thing in front of the camera today, that what the writing task is and how will we be improving our writing. Perfect. Right. So let us come towards the point, right? As I said before in my previous lessons, and I talked about the importance of English, that how is English important in any single stage of life. For the very first time, when I wrote something, and I still remember I was a kid, and I could not write even a single word. Why? Yeah, because I did not have even a single information about writing the things. Now, there is a very big difference between writing and writing. Writing and writing. Writing and writing. Yeah. Now, if I talk about these 2 points, right? So writing does not mean that you're holding a pen in your hand and you're having a paper and you're writing something on it. Yes, it is writing. But if I talk about the essays, so the story is completely changed. You definitely have the kinds of essays. Let me tell you something about the kinds of the essays, and I'll come back gradually according to the rules and regulations, that how would you be writing the appropriate essay and how would you be building your essay writing skills. Now, see, if you talk about the receptive skills,
Receptive skills means that you receive something, you put it in your brain, and then you utilize this stuff, and then you use it. In your communication, in your writing, and in your daily एक stuff. process है ना? Yes, it is known as receptive skills. आप Receptive receive skills. करते हो Receive कुछ. करते हो, ठीक है? exactly. That's known as receptive skills. Alright. तो आप क्या करते हो? You receive the things, you do the brainstorming, and then you perform the duties. You perform the things in order to write an appropriate and effective essay. Alright. But essay is not something like a piece of cake. It has kinds. It has kinds. Now, suppose I'm feeling hungry and I'm given with 4 or 5 sort of separate dishes, and I would definitely want to taste all of them because all of them are kept in front of me. Same is the case with essays. Now, if you want to learn essays, you have to learn all the modules and all the kinds of the essays. Now, let me tell you something. We have got the persuasive, we have got the descriptive, we have got narrative, we have got expository, we have got argumentative, we have got analytical. These are the 7 kinds of the essays. 7 kinds. Which and ones? we are going to discuss it one by one, Yes. right? Let, yes. let me tell again. Yeah. We would love to. Persuasive, descriptive, narrative, expository, argumentative, analytical. Now, let me come towards these points, and I would say that all of the essays are important to write. But before I'm explaining these 7 parts, I would come towards what essay is. Yeah, exactly. What is essay? What is essay? What? The students do not know what essay is. What is essay? Means that your expressions are shown in your words. Your reflection. Yes. Now, if I speak, right, madam, you can easily look at me and you can listen to my silences and you are saying that, okay, this man is speaking an English conversation and he's speaking good. But what if you write essay? Yeah. And how would you be explaining your things up? Yeah. How would you be explaining your feelings, your guts, your emotions, your thoughts, your feelings, your sentiments, whatever? How would you put things on? The point is that you have to have the rules and regulations first. And you come back towards the writing essay. That okay, the very first thing, foremost, सबसे ज़्यादा important, your English vocabulary. Now, suppose if I do not have vocabulary about the political system of Pakistan, if I'm given with an essay in my comparative examination that tell me something about the democracy, so if I do not know about the democracy, if I do not know about the dictatorship, if I do not know about the amendments, if I do not know about the constitution, if I do not know about the articles, if I do not know about the acts, if I do not know about the paper submitting and the congregations and seminars and signs and all that, if I do not know anything about them, I would not be able to write an essay. I will write, but the essay will not have an effective result. Exactly. Why? Because Miss Warda will not have good vocabulary to write that essay. Now, that is something I always explain in front of the students, that brothers, or I've got elders as well, I've got my students, so I say, if you really want to improve your English essay writing, the very first and important thing is your vocabulary. You must have academic vocabulary, to be very honest. You mean so information, hai na? Yes. Information about them will come towards gradually. The very first thing is vocabulary. If you have good vocabulary, so you will easily be writing the essay, and if you do not have vocabulary, you will have problems. I do not want you people to use tough vocabulary. I just want you people to use the normal vocabulary. But the point is, you should memorize that words. You should have the academic vocabulary in your brain so that you can use it appropriately. Now, if you're not belonging from a medical field, then suddenly you receive a topic which is describing about the medical terms. What happens that, oh my God, you would definitely say you would be out of mind. Why? Because you will not have enough vocabulary for that. So how will you be writing 250 words complete essay? How would you work on it? Because we don't know कि IELTS का आप एग्जाम दे रहे हैं या कोई और भी एग्जाम है, आपके पास कौन सा टॉपिक आ सकता है, राइट? तो फिर हम लोगों को फुल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, vocabulary सब कुछ होना चाहिए हमारे पास to make it very catchy, right? Yes. vocabulary की बड़ी इंपॉर्टेंस है. आप सबसे पहले vocabulary पे आपने काम करना है. vocabulary के बाद जाकर जो है वो आप slowly and gradually, मैं 2 और points की तरफ भी आ रहा हूँ. The very first thing is vocabulary, the academic vocabulary. It is must, it is mandatory. Write it down, guys. So, you have to write it with yourselves. Vocabulary is very important. See, you can use fetch in place of drag. You can use consume in place of use, right? Yes. You can use conserve in place of spend. You can use earn in place of having. Exactly. You can use splitty in place of being lethargic.
यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज synonyms. समझ आ रही है बच्चों आपको? तो ये क्या है कि आपने अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी आपने अच्छा आप नीड की जगह पे रिक्वायर लिख सकते हो, आप रिक्वायर की जगह पे नीड लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यानी आपने वोकेबलरी को इस तरह से कैटेगराइज करना है कि आपका ऐसे जो है वो इफेक्टिव नजर आए. दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग. एक सर एक इफेक्टिव नजर आए और एक ये कि आपकी लैंग्वेज इतनी भी कॉम्प्लेक्स ना हो, जी बस ऐसी हो, इतनी बेहतरीन हो कि दूसरे बंदे को समझ आ जाए जी आपने लिखा हुआ क्या है, जी आपका जी मैसेज कन्वेड हो. जी 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 बिल्कुल ये exactly चीज. exactly. So the very first thing is vocabulary. Exactly. Let us come back towards the second module, which is GRAMMAR. It is grammar. Grammar. The most It is important. very important in your speaking. It is very important in your listening. It is important in your reading. It is important in your writing. It is even important in any single stage of your English learning stage. Exactly. Why? Now, because if I do not know about the passive voice, how would I be making the sentences? Now, I do not know where to use was and where to use were. Yeah. I do not know how to make the compound sentences. If I do not know how to make the complex sentences, if I do not know anything about the dependent clause and independent clause, if I do not know about the conjunctions, if I do not know about the coordinative and subordinate conjunction, if I do not know about the coordinating or if I do not know about the phrase and clause, if I do not know about the lexical resources, if I do not know about the linking words, if I do not know about the causative verb, so all of these things will definitely make hurdle for you. Why? Because you know the name of a car, but you do not know how to drive How it. to write it. And even in the beginning क्या होता है, हम लोग sometimes जो बहुत minor चीजें होती हैं, noun, pronoun, preposition, adverbs, इन चीजों में भी हम mistakes कर जाते हैं ना. जी तो ये बिल्कुल, even ये भी चीजें जो है हम लोगों बिल्कुल को कर सकते consideration हैं, में बिल्कुल लेकर कर आनी सकते चाहिए. हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. और देखें ग्रामर का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा. And it's a इट इज़ vast इम्पोर्टेंट. subject. Yeah. और जब आप अपने ग्रामर के अंदर डीप जाते हैं, सो यू स्टडी, यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री Yes. ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन. ना मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगर मैं आपको टेंस का पूछूं, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आता तो इट मीन्स कि आपकी नेग्लिजेंस हुई ना. बिल्कुल बिल्कुल. आप क्या कहती हैं इसके बारे में? बिल्कुल, I agree. I second यस with you. Yeah, मीन्स yeah. अगर आपको टेंस नहीं आते मैडम, अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं आते, अगर आपको वॉज वर विल वुड की यूजेज का नहीं पता, तो आप इंग्लिश लिखना तो छोड़ो, आप उसको गलत कर दोगे, आप उसका बेड़ा गर्क कर दोगे. मतलब ये है कि आप पेट्रोल के इंजन में डीजल डाल दोगे. यानी होता ना तबाह बर्बाद कर देना. क्यों? क्योंकि हर एक चीज आपने सीक्वेंस में लेकर आनी है अपने साथ. You have to bring and you have to make these sequences of each and everything. Now that is the point you would consider yourself. That if you're sitting in an examination hall, you're having a friendly discussion with your own selves, like as I said before, that you're explaining, you're putting your expressions on the piece of paper. You must have the good vocabulary. You must have the good rules and regulations. You must have the good appropriate. You must have the appropriate points through which you are brainstorming. You're generating the ideas, and then you're putting them on the piece of paper. So that is the thing which really brings a very good effect if you have good vocabulary, plus if you have good grammatical structures, and if you have good command over the grammatical structures, you do know how to use was, were, will, would, shall, should. अच्छा, ये टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि बच्चों आपकी 90% इंग्लिश का इन्हिसार जो है, the 90% of your English is dependent on the auxiliary verbs. Now what auxiliary verbs are? Let me explain. We have 23 auxiliary verbs. How many, madam? We have 23 auxiliary verbs. And among these 23 auxiliary verbs, the 90% of your English communication is covered. So like if you memorize these 23 auxiliary verbs, let us repeat. Is, am, or, do, does, did, has, have, had, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, be, been, being. Now these are 23 auxiliary verbs. Perfect. And now these 23 auxiliary verbs will definitely help you to write this stuff up. Exactly. Now if I do not know what to use with plural and what to use with singular. Singulars, yeah. अगर मैं singular के साथ वर लगा दूं और plural के साथ was लगा दूं, बेड़ा गर्क हो गया ना. तो जब आप ऐसे राइटिंग करोगे बच्चों, you have to work on your vocabulary first and then you have to work on your grammar. And if you work on your grammar, you will easily write this stuff. अच्छा. जी मैडम. I want to add one thing more. सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. इट डजेंट मैटर कि आप लोगों ने वो वाली एज गुजार ली है कि जहाँ पे आपकी ग्रामर की बिगिनिंग थी, राइट? हमारी जो स्कूलिंग, जैसे मैं आपको कल बता रही थी कि लाइक आई हैव नेवर बीन थ्रू द टेंसेस इन अ वेरी प्रॉपर वे, राइट? तो आपको जब भी लग रहा है कि आपके अंदर एक डेफिशिएंसी आ रही है, आपने उसको फुलफिल करना है, तो जस्ट गो फॉर इट.
learn, because we are all are here to learn, right sir? Exactly. Same is the case in here. Yeah. लर्निंग की कोई स्टेज नहीं होती है जी. सो थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीसरा जो है आपका आइडियाज. idea, You have to work on your ideas rather than your thoughts. critical thinking. आइडिया मतलब आप कौन सा आइडिया आप जनरेट करते हो और उस आइडिया के थ्रू आप क्या जाकर लिखते हो. इट रियली मैटर्स. तो आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी है. उसके बाद जो है आपने अपना ग्रामर पर काम करना है. और थर्ड आपने अपने आइडियाज जनरेट करने, अपने आइडियाज जनरेट करने. कट कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें. कट कॉपी वाले जो है वो बहुत बैठे हुए हैं मार्केट में. तो आप जो है क्या करें, ट्राई टू बी यूनिक, बी योर सेल्फ, जैसे मैडम कहते हैं. तो बी योर सेल्फ. ठीक है. आइडियाज आपने उसको, यस मेरी क्लास आए, मैं आपको सिखाऊंगा कि आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हैं. मैं आपको टेंसेस, ग्रामर, एंटायर सब कुछ सिखा दूंगा इंशाल्लाह. मैं आपको वोकेबलरीज दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह. और उस पे जो है आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस, आपको अपने अंदर बहुत बड़ी चेंज देखने को मिलेगी. क्योंकि ये जो वोकेबलरी 500 वोकेबलरीज हैं, ये मैंने खुद लिखी हैं और ये मेरे 9 साल का तजुर्बा है. लाइक यू नो, ये वोकेबलरी मैंने कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ. और ये वही वोकेबलरीज हैं जो कि मैं खुद अपनी वोकेबलरी में यूज़ करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी अपनी क्रिएटिव राइटिंग में इसको यूज़ करें. चाहे फीमेल्स हैं, चाहे मेल्स हैं, चाहे एल्डर्स हैं, चाहे यंगर्स हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हैं, या बिजनेसमैन है, या कोई जॉब प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई मसला नहीं. आप मेरे पास आ सकते हो. मेरे दरवाजे आपके लिए ऑलरेडी ओपन है और हमेशा खुले रहेंगे. ठीक है. तो आपने क्या करना है जी, आपने अपने राइटिंग को काम करना है आपने. क्योंकि राइटिंग का आपको पता है मैडम, तलखीस निगारी का नाम आपने सुना है. तलखीस निगारी मीन्स के आपने समंदर को कूजे में बंद करना है. बिल्कुल ऐसे ही है. यानी आपको एक इतना बड़ा टॉपिक दे दिया. फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आपको दे दिया कि मिस्टर इमरान खान के बारे में कर लेते हैं कि मिस्टर इमरान खान ने कहा कि हर मदर डाइड अ पेनफुल डेथ ऑफ कैंसर. So he made a cancer hospital by the name of Shaukat Khanum Memorial Cancer. Like, you know, Shaukat Khanum is the name of Imran Khan's mother. Right? So उनकी याद में उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया. कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर कैंसर की सहूलियात मुयस्सर नहीं है. You know, we've got a lot of hospitals where the cancer facilities are not provided. और अगर हैं भी तो वो यूज में नहीं है. अगर हैं भी तो बहुत कम है. कम है. ऐसे ही है. तो आपको क्या लगता है, शुड द गवर्नमेंट प्रोवाइड कैंसर हॉस्पिटल्स? प्रेजेंट योर आइडियाज. Write an essay between 250 to 350 words using your own ideas. So if you're using your own ideas, कैसे आइडियाज करोगे? आपके पास वोकैबुलरी होगी तो आप यूज करोगे ना. आपके पास ग्रामर होगी तो आप यूज करोगे. आप अपने आइडियाज जनरेट अपने दिमाग में करोगे तो आप लिखोगे ना. अगर आपको इन चीजों का पता नहीं है मैडम, तो आप क्या करोगे? आप बीच में कुछ और लिख दोगे जो कि राइटिंग ऐसे के मुकम्मल खिलाफ है. किसी फिल्म की कहानी कुछ भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स. कुछ भी लिख देते हैं. इज एम आर का बेड़ा गर्क कर देते हैं. वॉज वर्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं. खैर है, बंदा गलती कर करके सीखता है. नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. आप गलतियां करो, कोई आप पे हंसेगा नहीं, कोई आपको नेगेटिव टर्म नहीं बताएगा. क्यों? बिकॉज यू आर लर्निंग. एक टाइम आएगा कि आप बेटर लिख लोगे. हम सब ने ऐसे सीखा. हम कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आए थे. मैं पर्सनली अपनी एग्जांपल दूं, आई रिटन लॉट ऑफ आर्टिकल्स. मैं खुद इतनी गलतियां करता था. कई चीजें तो ऐसी हैं जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ. बिल्कुल. यानी बीइंग अ लेक्चरर मैं अभी भी सीख रहा हूँ. तो लाइक इट इज अ डीप सी. इसमें किसी किस्म की ममानियत नहीं है. इसमें किसी किस्म की शर्म की बात नहीं है. बिकॉज यू आर लर्निंग. Right? There is no restriction. I mean, you know, there should be no restrictions in learning. तो इसमें जो है आपने क्या करना है, अपनी इन 3 चीजों पर स्टार्ट में काम करना है. तो ये मैडम, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर आंसर. दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन दैट व्हाट ऐसे इज. अच्छा, एक मजे की बात. हम लेट्स सपोज IELTS कर रहे हैं और वी आर गिविंग सम अदर सब्स्टिट्यूट टेस्ट. ठीक है. उसके अंदर हम लोगों को क्या होता है कि वो लोग हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने विद इन दीज वर्ड्स अपना ऐसे जो है वो कवर अप करना है. जी ना. अब आइल्स में जो है, आइल्स में हमारे पास जो है जी, आइल्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आइल्स में मेरे पास जो है 2 टास्क हैं. राइटिंग टास्क 1 व्हिच इज ऑफ 20 मिनट्स. उसमें आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है, या लाइन दिया जाता है, या ग्राफ दिया जाता है, या जो है पाई चार्ट दिया जाता है. तो उसको आपने पिक्चर को देखकर आपने उसको एक्सप्लेन करना है. बेसिकली राइटिंग टास्क 1 इज नॉट ऐसे, इट इज अ स्टेटमेंट. मतलब आपने पिक्चर देखकर आपने उसको डिफाइन करना होता है. सो राइटिंग टास्क 1 इज नॉट ऐसे, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच यू हैव टू प्रोवाइड. दूसरा राइटिंग टास्क 2 जो है वो 40 मिनट्स का है, और उसमें आपको 250 वर्ड्स पे एक ऐसे लिखना होता है जिसका टॉपिक वो आपको दे देते हैं.
Right, this is very important, जी right? हमें टाइम मतलब मैनेजमेंट भी आनी चाहिए ऐसे जी लिखते टाइम हुए. मैनेजमेंट मैंने आखिर में बात करनी है टाइम मैनेजमेंट आपने हम्म. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो Exactly. मतलब 40 मिनट्स के अंदर आपने टॉपिक को देखना है माइंड जनरेट करना है आइडियाज जनरेट करना है थॉट्स जनरेट करने हैं और उसके बाद आपने जाके पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट करना ठीक है, और प्रूफ रीडिंग, ठीक है, वो तो फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं आ गई. है सही जी है, सही है, सही है. जी सो तो ये 250 वर्ड्स की हाँ लिमिट होती हाँ हाँ है हाँ. ऑक्सफोर्ड में 350 वर्ड्स की लिमिट है और ड्यूलिंगो में जो है वो तो वो आपको कहते हैं कि 3 मिनट तक लिखो अच्छा, तो दे मतलब डोंट गिव जितना यू आप लिख लिमिट. सकें हाँ उसमें अच्छा, लिमिट नहीं ये है ज्यादा अच्छा नहीं होता, व्हाट डू यू से, हाँ है ना? बिल्कुल है लेकिन उसमें टाइम कम है ना 3 मिनट्स में आप कितने लिख लोगे कितना लिख लोगे, ये भी हाँ बात है. राइट. सो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं इस बारे में. अब जी आप जी टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा कोई बात करना चाह रहे जी हैं? मैं आपको पहले बता दूं कि हम्म. ये जो मैंने आपको दी I explained the kinds of essays for you या. and I say that all right that is all about the persuasive the descriptive the हम्म. narrative expository argumentative and analytical हम्म. in persuasive you persuade हम्म. right in descriptive you describe या. in narrative you narrate नरेट something समथिंग, एग्जैक्टली. right in expository you expose something एक्सपोज समथिंग, in एग्जैक्टली. in argumentative you give arguments या. argument in favor argument इन against इन अगेंस्ट, ठीक या. है and in analytical you show the analysis एनालिसिस. ठीक है सो लाइक दीज आर दी 7 काइंड्स तो ये जो है 96. अभी तो टाइम की ममानियत है वक्त की कैद है वरना मैं ये सब चीज़ें बता देता ठीक है तो ये जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने क्लास में बताऊंगा अगर आप लोग मेरे पास आते हैं यू आर ऑलवेज वेलकम अल्ताफिर वी एग्जैक्टली. टीच यू दिस स्टफ लास्ट बट नॉट लीस्ट टाइम की ममानियत है टाइम की कैद है तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर बात कर लूँ ताकि उसके बाद जो है फिर हम इसको वाइंड अप कर लें अच्छा इसमें हमने सबसे पहले करना होगा लाइक फॉर एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट या. now if I'm holding this cell phone in my hand and if I want myself to be mm, you know an essay writer तो सबसे पहले मुझे अपना mindset इस तरह सेट करना होगा that if I'm holding this thing in my hand and if I really want to be a very good essay writer so it will definitely give you a bit of crucial time and tough time why because that tough time is all about your own exceptions that you compile in the mid of the conversation एग्जैक्टली. तो आपने एक सेंटेंस को एक ऐसे को इस तरह से कंपाइल करना है कि आप उसको आइडियाज जनरेट करके उसको ख़त्म कर दें टॉपिक आपको मिल गया फर्स्ट 3 मिनट्स आपने आइडिया जनरेट करने हैं फर्स्ट 3 मिनट्स रिमेनिंग 2 मिनट्स आपने वोकेबलरी अपने जहन में लानी है you will have wristwatch or you will have timer on the table you can easily watch it तो स्टार्ट के 5 मिनट्स आपके जनरेटिंग दी आइडियाज़ के हो गए और इसके अलावा जो है अपना जो रिमेनिंग 2 मिनट्स हैं वो आपने क्या कर दिए अपने वोकेबलरी आपने अपने जहन में डाल दी उसके बाद आपने अपना लिखना स्टार्ट किया अब मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसे में बेसिकली होता क्या है ऐसे इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पैराग्राफ्स 3 or 4 पैराग्राफ्स सही हो गया. the first one is known as head in which you define the topic ठीक है. in the head you define the topic define that the what topic. you are writing about and do you agree or disagree Disagree, right. then we come towards body and in body you must have 2 body paragraphs सी है. you must have Two body two paragraphs. body paragraphs in All first right. body paragraph you should talk about the first side of the coin and in body paragraph 2 you should talk about the other side of the coin Correct. for example अगर आपने डिस्क्रिप्टिव करना है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में तो आपने एक चीज़ को डिस्क्राइब कर देना है और आपने जो है फिर उसका जो है ना दूसरा रुख जिसे बयान करना कहते हैं अदर साइड ऑफ द कॉइन आपने वो भी उसको बयान करना होता है अब ये जो 2 बॉडी पैराग्राफ्स आपने एक्सप्लेन कर दिए फिर उसके बाद आप आ जाते हो टेल की तरफ टेल में होता है कंक्लूजन यानी हेड में डिफाइन द टॉपिक बॉडी में एक्सप्लेन द टॉपिक कंक्लूड टेल में कंक्लूड द टॉपिक तो आपने इन चीज़ों में सबसे पहले आपने अपने लिंकिंग डिवाइसेस पर काम करना है मतलब लिंकिंग डिवाइसेस किसे कहा जाता है firstly secondly thirdly however similarly to commence with on the first hand on the other hand consequently finally to summarize ये चीज़ें जो है ना हमारे पास ये लिंकिंग डिवाइसेस हैं तो इन लिंकिंग डिवाइसेस को आपने however
ठीक है, इसको आपने क्या करना है, याद करके और इसको आपने अप्रोप्रिएट ऐसे में इसको इस्तेमाल करना है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड एंड यूनिक पार्ट। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा स्टूडेंट्स को। और तब जो है जनाब आप क्या करेंगे, आप एक सेंटेंस को सही तरह से डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लिंकिंग डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ गुड वोकैबुलरी, विद द हेल्प ऑफ गुड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट आई सेड बिफोर। तो इसमें जो है आपने क्या कर देना होगा, खूबसूरत राइटिंग, आप प्यारी राइटिंग आप उसमें कर सकते हैं। तो जब आप एक राइटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये राइटिंग तो ऑलरेडी आपकी हो जाती है। नेक्स्ट जो है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप आखिर में राइटिंग आपने कर लिया, स्टार्ट में जो है आपने माइंड जनरेट कर लिया, आपने ऐसे लिख लिया, तो आपके पास स्टार्ट के 5 मिनट्स आपने गैदरिंग द थॉट्स, मेकिंग द आइडियाज और वोकैबुलरी के लिए रख लिए। 30 मिनट्स जो है वो आपने राइटिंग के लिए रख लिए, और जो लास्ट में 5 मिनट्स बचते हैं वो आपने प्रूफ रीडिंग के लिए रख That लिए। is the most important. जी, अब प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. प्रूफ रीडिंग इज very Very, important. very Why? important, right. Because after proofreading you will be you will look at your vocabulary, you will look at your mistakes, and you will look at the things what you commit in there, and then okay, कोशिश करें कि पेंसिल से लिखें ताकि आप रब Yeah. कर सकें उसको। Exactly. ठीक है, तो मतलब गलती, वो कहते हैं ना, जब हम बच्चे थे तो पेंसिल से लिखते थे ताकि गलतियां मिट जाती थी। Exactly. अब हम बड़े हो गए तो बॉल पेन से लिखते हैं क्योंकि जो गलती कर ली वो मिट नहीं सकती। मिट नहीं ठीक है सकती। तो कोशिश कीजिए कि Yeah. पेंसिल से लिखिए ताकि आप अपनी गलतियों को रब करके दोबारा लिखें। कोशिश करें कि खुला खुला लिखें, प्यारा प्यारा लिखें, खूबसूरत खूबसूरत लिखें। Exactly. गलतियां करें, मैं आपको ये नहीं कहता, गलतियां करें, जितनी गलतियां आप करोगे उतना अच्छा उतना ही आप आप सीखोगे, सीखोगे। तो बिल्कुल। आप पे कोई हंसेगा नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो कभी नहीं हंसूंगा, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और कोशिश करें कि अपनी क्रिएटिव राइटिंग, अपनी ऐसी राइटिंग पर काम करें। और फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी मसला, कोई भी शिकायत, इफ देयर इज एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, यू कैन डायरेक्टly come towards me, you can come into my office, you can sit with me, and I will definitely teach you inshallah. So I think Alright. this is all from my side. If there's anything, you can get ahead. Yeah, sir, thank you so much. It was such a wonderful session, I would say. और हमने बहुत सारी बातें जो हैं सर अमर वैसे सीखी हैं. But guys, the session is not limited. If you have any queries, if you need more details, and if you guys are facing any kind of problem going abroad, you can always visit Future Serves. And the address of our office is really very simple and it's very reachable. That is Sheikh Yaseen Trade Center, 3rd floor, main Arbab Road stop. All right. So guys, you can also visit our website, that is www.fsoes.com. And I would recommend you to visit our Facebook page regularly so that you guys can get the latest updates about our new live sessions, because in the future we are going to bring many interesting topics to be discussed for you people. So guys, be yourself, be connected, stay connected to Future Serves, because Future Serves is always and always and always here to serve you. Thank you very much for your precious time.